अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सोबिया। आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट इज यूफेमिज्म। इन यूफेमिज्म वी यूज माइल्ड एंड इनडायरेक्ट वर्ड्स फॉर समथिंग हार्श, अनप्लेजेंट और ब्लंट। जब भी कोई चीज़ जो बोलने में बहुत ज़्यादा सख्त महसूस हो रही हो या हमें लगता है कि उसका बोलना डायरेक्ट बोलना ज़रा मुश्किल हो या डायरेक्ट बोलना किसी को हर्ट कर सकता है, उस केस में हम यूफेमिज्म यूज करते हैं। उसमें हम उन वर्ड्स का इंतखाब करते हैं जो उस हार्श या अनप्लेजेंट बात को जरा बेहतर तरीके या सिंपल अल्फाज में बता सके। यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल। इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट समवन जो हमसे झूठ बोल रहा है। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग दैट ऑन हिज फेस, हम कहते हैं यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल। यहाँ पे फेयरी टेल का क्या मतलब होगा? यू आर टेलिंग अ लाई। He seems to be between jobs. Between jobs means someone is unemployed. अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो, बेरोजगार है, तो डायरेक्टली उसको ये कहने के बजाय कि तुम बेरोजगार हो, we can use these words. He seems to be between jobs. He has fallen asleep instead of dead, because dead एक ऐसा वर्ड है विच मे साउंड ब्लंट और विच मे साउंड अनप्लेजेंट। सो डेड की जगह हम यूज कर सकते हैं फॉलन asleep. सो फॉलन asleep बेसिकली मीन्स ही इज डेड। It will take decades to recover from the collateral damage. Collateral damage कौन सा होता है? Damage which done as a result of war, including deaths and injuries. Collateral damage क्या होगा? जो किसी भी जंग के नतीजे में डेथ की फॉर्म में या इंजरीज की फॉर्म में होता है। So instead of saying all this, we have used one term, that is collateral damage. Examples from literature. You are a manipulator. I like to think of myself as an outcome engineer. This extract is from Lover Eternal from J.R. Ward. इसमें कोई इंसान दूसरे इंसान को मुखातिब करके ये कह रहा है कि तुम बहुत बड़े मैनिपुलेटर हो, यानी कि तुम एक बहुत हेरा फेरी करने वाले इंसान हो। उसके जवाब में वो इस तरह की हाँ स्टेटमेंट बोलने के बजाय वो क्या कह रहा है? आई लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन आउटकम इंजीनियर। सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम जस्ट क्लेवर, आई एम नॉट अ मैनिपुलेटर। Next is antithesis. In poetry, an antithesis is two terms, phrases, or ideas that contrast or have opposite meanings. What does it mean? Antithesis में क्या होगा कि एक ही statement में या एक ही लाइन में देयर विल बी टू कंट्रास्टिंग आइडियाज, देयर विल बी टू वर्ड्स जिनका मीनिंग टोटली ऑपोजिट होगा बट स्टिल दे विल बी प्रेजेंट इन द सिंगल लाइन। जैसे कि टू err is human, to forgive is divine. इसमें there are two words which are in red color if you see, err and forgive. दोनों का मीनिंग टोटली ऑपोजिट है। err का मतलब होता है गुनाह करना और forgive का मतलब होता है माफ करना। दोनों वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग है बट बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लाइन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। टू err is human, to forgive is divine. गुनाह करना इंसान का काम है और माफ करना डिवाइन या फिर अल्लाह ताला का काम है। Many are called, but few are chosen. Again, many and few, two words with opposite meanings. Both are in a single sentence, so it is antithesis. Examples from literature. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Less and more, both words with opposite meanings in a single line. So this is an example of antithesis. Another example. Good we must love and must hate ill, for ill is ill and good good still. But there are things indifferent which we may neither hate nor love, but one and then another prove. If you see this example, there are two words, and love and hate both have opposite meanings, so this is an example of antithesis. Next is oxymoron. In oxymoron, it combines two contradictory words, qualities for the same thing. It is a special type of antithesis. Oxymoron भी एंटीथेसिस की तरह ही होता है। इसमें दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स या दो डिफरेंट वर्ड्स इकट्ठे आते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। It says the pasta was awfully tasty.
there are two different words. Awfully means bura and tasty means it is really delicious. There are two different words, but they are present in a single line. So this is an example of oxymoron. They were asked to submit the original copy. Original and copy, opposite words. So this is an example of oxymoron. The escaped prisoner was finally caught. Escaped and prisoner. So innocent arch, so cunningly simple. इसमें innocent and cunningly both are different words with different meanings, but they are in a single line. So this is oxymoron. अगर आप फर्स्ट थ्री एग्जांपल्स देखें तो इसमें जो वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, ये कपल ऑफ वर्ड्स हैं, ये दोनों गट्ठे गट्ठे हैं, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ द फोर्थ एग्जांपल. यूजुअली ऑक्सीमोरॉन में जो वर्ड्स हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, वो साथ ही आएंगे, लाइक ऑफुली टेस्टी, ओरिजिनल कॉपी एंड एस्केप प्रिजनर. बट जब हम पोइट्री की बात करें या जब द वे द पोइट्स हैव रिटन, उसमें ज़रूरी नहीं है कि दो वर्ड्स साथ साथ आए, जैसे कि इट इज़ द केस विद द फोर्थ एग्जांपल, सो इनोसेंट आर्च बट सो कनिंगली सिंपल. Let us see an example from literature. Good night, parting is such a sweet sorrow. It is from Romeo and Juliet by Shakespeare, जिसमें sweet और sorrow दोनों के opposite meanings है. Another example, cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Perfect and imperfections. A combination of words with different meanings. So it is also oxymoron. Now the question is कि अगर oxymoron और antithesis में दो contrasting words ही होते हैं तो दोनों में difference क्या है? For that we have to go back to the examples of oxymoron and antithesis. ये oxymoron और antithesis की वो examples हैं जो अभी हमने recently discuss की हैं. Now what happens in antithesis and what happens in oxymoron? Antithesis में जो दो contrasting words हैं वो हमेशा contrast show करते हैं, वो हमेशा opposite या difference show करते हैं. बट इन द केस ऑफ ऑक्सीमोरॉन, ये दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, ये एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं. कैसे? एंटीथेसिस के एग्जांपल देखें. टू err इज ह्यूमन, टू forgive इज डिवाइन. इस एग्जांपल में देयर आर टू कंट्रास्टिंग आइडियाज, err and forgive, many and few in the second example. On the other hand, अगर आप ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल्स देखें तो उसमें awfully tasty, it these two words have created a new meaning instead of showing a contrast. Awfully tasty का meaning हो सकता है कि कोई भी चीज जो unexpectedly बहुत ज्यादा tasty हुई हो. So two opposite words, awfully and tasty, ने मिला के they have created a new meaning. Similarly, they were asked up to submit the original copy. इस केस में original copy means it is an original document. The escaped prisoner was finally caught. कौन सा prisoner? Escaped prisoner. Though these are contrasting words, but it has created a new meaning. Escaped prisoner क्या हुआ? जो भागा हुआ prisoner है. So innocent arch, so cunningly simple. इसमें दो innocent और cunningly दोनों गट्ठे साथ नहीं आए, but still innocent and cunningly both are creating new meaning. आर्च जो होती है एक कर्व्ड ओपनिंग होती है किसी भी बिल्डिंग में. अब इनोसेंट एंड कनिंगली आर्च का क्या मतलब हुआ कि वो आर्च जो देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है लेकिन उस सिंपलिसिटी में बहुत ज्यादा डिटेल्स है. तो इसमें भी दो इनोसेंट एंड कनिंगली दोनों वर्ड्स इकट्ठे नहीं आए, बट स्टिल इट इज क्रिएटिंग अ न्यू मीनिंग. दीज टू वर्ड्स आर क्रिएटिंग अ न्यू मीनिंग. ऑन द अदर हैंड एंटीथेसिस में जैसे मैंने अभी कहा कि वो दो वर्ड्स कंट्रास्टिंग आइडियाज ही शो करेंगे, वो दो वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग ही शो करेंगे. Next is epigraph. It is a short, interesting idea expressed in a satirical and funny manner to excite surprise or arrest attention. एपिग्राम में एंटीथेसिस की तरह दो कंट्रास्टिंग आइडियाज ही होते हैं, लेकिन वो कंट्रास्टिंग आइडियाज ज़रा फनी वे में या सैटिरिकल वे में या फिर ज़रा तंज की फॉर्म में इस तरीके से पेश किए जाते हैं जिससे किसी भी रीडर की अटेंशन ग्रास्प हो सके. जैसे कि
Mankind must put an end to war, or war will put end to the mankind. This quote is by John F. Kennedy. Then, if you can't be a good example, you'll just be a horrible warning. Examples from literature. The child is the father of man. I can resist everything but temptation. इन सारे स्टेटमेंट्स को देख के एक चीज जरूर रियलाइज होगी कि इन स्टेटमेंट का आखिर मीनिंग क्या है, as all of them have some hidden meaning. Moving on to the last figure of speech, which is very much used in poetry. Poetry के अलावा ये prose में भी बहुत ज़्यादा use होती है. That is irony. A figure of speech in which the real meaning is the opposite of what is conveyed. Irony के लिए हम word satire भी use कर सकते हैं. इसके लिए हम word mocking भी use कर सकते हैं. ऐसी statement जिसका meaning बिल्कुल और हो और जो बोली जाने वाली स्टेटमेंट हो बिल्कुल डिफरेंट लगे, इसको उर्दू में आप तंज भी कह सकते हैं. शी इज माई ब्रिलियंट डॉटर हु डज नॉट इवन नो व्हाट 2 + 2 इक्वल्स. इस स्टेटमेंट को अगर देखें तो वो क्या कह रही है कि शी इज माई ब्रिलियंट डॉटर. कौन सी डॉटर जिसको ये भी नहीं पता कि 2 + 2 क्या होते हैं. सो देयर इज a satire in it, there is an irony in it. A police station was robbed yesterday. Police station का काम क्या होता है, that it should be protecting people, but a police station was robbed yesterday. This is very clear an irony. His directions were as clear as mud. Mud is never clear. कभी मट्टी क्लियर हो सकती है नहीं. So अगर हम कहेंगे his direction was as clear as mud, so this is very clearly an irony. इसका मतलब है उसकी directions बिल्कुल भी clear नहीं थी. Examples from literature. Water, water everywhere, nor any drop to drink. इसका मतलब है कि कई दफ़ा आपके आसपास हर चीज़ मौजूद होती है, बट आप उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते. सो इट शोज इट इज़ आयरनी कि सब कुछ आपके आसपास मौजूद है, बट आप उससे तब भी फ़ायदा ना हासिल कर सको.